Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay, so let me continue. तो हमने देखा डायरेक्शन. सिमिलरली जो ये साइन थीटा होगा बिटवीन टू आर्बिट्ररी डायरेक्शंस, तो वो भी हम कर सकते हैं. So let me share the screen in a similar manner. Cross product लेंगे. तो similarly sine of theta is just of course E prime cross E, और E नहीं, I think it should be E cross E prime. Of course उसकी length हम ढूंढ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर से. So that would be just evaluate. So it would be L times RU plus M times RV cross product with L prime times RU plus M prime times RV. And if you take the cross product and observe that ये जो RU cross RU 0 होगा, RV cross RV 0 होगा, so you will get, obviously you will get this L M prime minus ML prime, यही दो quantities बचेंगी, RU cross RV into RU cross R. Oh, which of course अगर मैं इस, because this is a scalar, so it would be L M prime minus ML prime and into length of RU cross RV, which of course it would be actually modulus of this. Okay, but that would be modulus of Lm prime minus Ml prime times h, क्योंकि इसका नाम h है. So similarly tan theta would be, वो तुम खुद करोगे, tan theta is equal to sin theta by cos theta, वो तुम evaluate कर सकते हो. Okay, and of course what would be the relationship between the direction ratios? So basically they would be proportional to these vectors. So मेरे कहने का मतलब है, मतलब इनफैक्ट एनी नंबर्स, हम कुछ भी नंबर्स अब ले सकते हैं क्योंकि हमने उसी का यूनिट वेक्टर बनाया है. एनी नंबर्स लैम्डा म्यू प्रोपोर्शनल टू Lm are the direction ratios, because that could be any. उस वक्त हमने उसका लेंथ को क्वांटिफाई नहीं किया था, सिंपली डायरेक्शन को, तो इसका मतलब उनका एक प्रोपोर्शनैलिटी होगी because they are in the same direction. इसका ये है कि सिर्फ Lm जो है वो यूनिट वेक्टर है in the tangent plane, are called direction ratios, हम इनको कहते हैं. Of course चूंकि proportional है तो फिर you can easily see the relationship between them. मेरे कहने का मतलब है L by lambda would be mu by say m by mu, चलो उसको मान सकते हैं some constant c, तो उससे हमें मिलेगा, it would imply that L is equal to some c times lambda and m would be some constant times mu. और अगर मैं यूज करूं, so now since it's a unit vector E, और उसका मतलब है EL square plus twice FLM plus GM square is equal to 1. So if we substitute these values, you will get EC square lambda square plus F twice FC square lambda mu plus GC square mu square is equal to 1. So which would imply, of course, C is nothing but 1 by the length E lambda square plus twice F lambda mu plus C mu square. No, sorry, G mu square. तो इससे हम evaluate कर सकते हैं and then we can see the relationship between them. So it implies that, इसका मतलब ये है कि L है बराबर, it is C lambda, so it would be lambda divided by square root of E lambda square plus twice F lambda mu plus G mu square. And of course M जो होगा वो होगा lambda के बाद है mu divided by same thing.
So this would be the relationship between the direction coefficient and direction ratio. That's obvious. इसमें कुछ कहने की बात नहीं. Now, if the angle between the two directions is zero, यानी if the angle, या ऐसे नहीं लिखता हूँ as a corollary इसको, या remark, क्योंकि हमने रिजल्ट ऐसा कुछ प्रूव किया नहीं. Remark: if the angle between the directions theta is equal to pi by 2, then of course cos of theta is equal to 0, which would give us the relation E L L prime plus F L M prime plus L prime M plus G M M prime. Because this is precisely my cos of theta, this would be 0. Or अगर मैं in terms of direction ratios लूँ, so then I just have to make the necessary substitution and I write L in terms of mu. खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, तो वहाँ डिनोमिनेटर में एक टर्म आ जाएगी. कौन सी टर्म? ये वाली. और वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अगर डायरेक्शन रेशियोज होंगे, एंड ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो मैं सीधे ही लिखता हूँ. अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात है तो आई विल गेट ई लैम्डा लैम्डा प्राइम, सेम थिंग, लैम्डा म्यू प्राइम प्लस lambda prime mu plus g mu mu prime is equal to 0 बात. Okay, now अगर हम इन डायरेक्शन कोफिशिएंट्स की बात करें, अनदर, चलो इसको रिमार्क 2 में लिखते हैं. ओके, तो 2. Now direction ratios of these special curves, of parametric curves, because ru, no, तो पहले लिखता हूँ. Now since r sub u can be written as 1 into ru plus 0 into rv, and rv is equal to 0 into ru plus 1 into rv. So therefore इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है, so direction ratios of the parametric curves are of course 1 0 and 0 1. और चूंकि of course इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा, so therefore there are also direction cosines and direction coefficients. मुझे थोड़ा हमेशा इसमें इधर उधर हो जाता है. I should write respectively क्योंकि दो थे. So therefore these are the direction ratios for the, ये कौन सी पैरामीट्रिक कर्व्स है? पहली वाली है जिसमें v कांस्टेंट है, यानी along u. v is equal to c of course and u is equal to c respectively. Okay, वो कहाँ गया है? ये थोड़ा ओवर से. कैन यू हियर मी? कुछ गलत, अच्छा ठीक है, पता नहीं कहाँ सोए हैं. Now what we do is we just do a simple result कि अगर मुझे एक डायरेक्शन के पता हो डायरेक्शन कोफिशिएंट्स, तो दूसरी डायरेक्शन के मैं ढूंढ सकता हूँ क्या? So okay, so what we do here, we do an exercise, find the direction coefficients making an angle of a direction
making an angle pi by 2 with the direction uh, having the direction coefficients lm। तो ये मैं तुम्हें एक होम असाइनमेंट दे देता हूँ। तो ये तुम कर सकते हो यूजिंग दिस कि अगर वो पाई बाई 2 है तो हमें कॉस थीटा मिलेगा 0, साइन थीटा मिलेगा 1। फिर उसमें से हमें सॉल्व करना है फॉर, सो लेट्स से उसके डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स l प्राइम m प्राइम है। देन वी कैन गो बैक एंड यूज दीज टू कंडीशंस कि साइन थीटा को 0 कर दो, कॉस थीटा को 1 कर दो, तो वो हो जाएगा। सो आई थिंक आई वुड स्टॉप हियर। कल हम अपने टाइम पे 12 बजे पे करेंगे। तो आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो यहीं से कर रहा हूँ। सो लेट मी स्टॉप हियर।